BS Unit 6, we are continuing today, and the topic is economic objectives. Economic objectives. In detail, we will do this topic today. So there are some economic objectives which any country will strive to, achieve. So first is maintain economic growth. And how do we do that? Maintain economic growth. Maintain economic growth. So when does the growth happen? They are looking for a keyword known as GDP, that is gross domestic product, in your answer. So how will you maintain economic growth? So economic growth occurs when country's GDP increases. That is the first point to mention. Economic growth occurs when countries GDP, that is gross domestic product, increases. Basically, it means that more goods and services are produced than the previous year. So it means more goods and services are produced in a country. Good morning, ma'am. Good morning. It means more goods and services are produced in a country as compared to previous year. So when GDP increases, basically what happens is, children listen, सुनो ध्यान से, कोई भी कंट्री के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो हम पढ़ रहे हैं, एंड हाउ it is to be achieved. That will be our next topic. So maintain economic growth is your first economic objective. Economic growth कैसे achieve करेंगे? What keyword the examiner is looking for in your answer is GDP, gross domestic product. We are looking for this keyword, children, and it should be there in your answer. Maintain GDP, gross domestic product. GDP का full form आपको पता होना चाहिए, gross domestic product. It means more goods and services are produced in a country as compared to previous year. तो जो second चीज हमको बतानी है, GDP कैसे बढ़ेगा जब आपकी कंट्री में प्रीवियस ईयर से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो. सो मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर. एंड उसके बाद और हमको एम्फसाइज करना है कि यदि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती तो और क्या क्या होता है हमारी कंट्री में. वन पॉइंट, यू स्टार्ट विथ goods and services का output and GDP. Now link it to employment, standard of living. इस सबसे अपन इसको link करेंगे. So this will increase country's income. This will increase country's income, living standard of people, living standard of people,
सो क्या बढ़ रहा है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, कंट्री की इनकम बढ़ रही है, एंड रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, and reduction in unemployment. So link GDP with more production of goods and services as compared to previous year. Then again इसके आगे और क्या, so इसके आगे कंट्री की इनकम बढ़ रही है, so increase in country's income, ये कीवर्ड है. Then next is living standard of people is increasing, so living standard of people. And last is reduction of unemployment. Reduction in unemployment, that is more people who are willing and able to work are getting work. So हमारा first economic objective था maintain economic growth. Second जो objective है that is achieve price stability. बहुत ज्यादा महंगाई is not good, बहुत सस्ती चीजें भी मिलेगी लास्ट ईयर से कम में, तो प्रोड्यूसर्स कैसे मोटिवेटेड रहेंगे. सो पॉइंट इज too much inflation and too much deflation both are bad for the economy. So we'll write next point, achieve price stability. So इसमें हमको बताना है इन्फ्लेशन क्या होता है एंड व्हाई इन्फ्लेशन इज नॉट गुड. सो इन्फ्लेशन इज, कोई बता सकता है इन्फ्लेशन क्या होता है? When you are Increase paying in more, price When of the goods value and of money goes down. So value of money going down and increase in, And the general price increases. yeah, general price level increases. So inflation is increase in general price level या average price level, increase in general price level of goods and services, achieve price stability में what is inflation? Inflation is increase in general price level of goods and services over a period of time. मैम प्रीवियसली तो आपने इन्फ्लेशन में लिखा था रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क That is of also general true. prices. यदि प्राइस बढ़ेगी तो रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ मनी ही होगा ना. सो आप इसको, और यदि सिर्फ इन्फ्लेशन का क्वेश्चन है तो आप उसमें ये लिख सकते हैं रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ मनी, इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल. दोनों पॉइंट एकदम सही है. Okay? So inflation is increase in general price level of goods and services over a period of time and reduction in value of money. So आपको ये भी बोलना है कि फॉल इन प्राइस लेवल इज नोन एज डिफ्लेशन. सो हमको ना तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन चाहिए ना बहुत ज्यादा डिफ्लेशन चाहिए, हमको स्टेबिलिटी चाहिए. दैट इज द पॉइंट. सो रिडक्शन इन general price level is deflation, which is also discouraged. So इन्फ्लेशन होना चाहिए बट थोड़ा सा इन्फ्लेशन. दैट इज, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल. कोई चीज लास्ट ईयर, मान लो लास्ट ईयर से राइस वॉज 100 रुपीज केजी, तो इस साल 2 या 4% बढ़ा हुआ इज ओके. 102 104 इज ओके, नॉट 102 का 120. और ये भी नहीं हो जाए कि 100 का जो था वो 80 में मिलने
लग जाए तो प्रोड्यूसर्स को हार्म हो जाएगा फिर. ओके, सो टू मच इन्फ्लेशन एंड टू मच डिफ्लेशन बोथ आर बैड फॉर द इकोनॉमी. लो इन्फ्लेशन can help the economy develop and grow better. So next point is low inflation can help develop the economy and grow better. See, if there is high inflation, what will happen? वो अलग से एक सब क्वेश्चन भी आता है, इसी के अंदर हम लिखेंगे effects of high inflation are, न्यू पैराग्राफ से effects of high inflation are, मतलब हाई इन्फ्लेशन बहुत महंगाई बढ़ गई तो क्या होगा. इफेक्ट्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन आर, फर्स्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग विल राइज. महंगाई बढ़ गई तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने ही वाली है. कॉस्ट ऑफ लिविंग विल राइज एंड रियल इनकम ऑफ पीपल विल फॉल. एंड रियल इनकम, पहले जो चीज 100 रुपए खरीद पा रही थी या $100 जो खरीद पा रहा था, अब वो नहीं खरीद पा रहे. सो $100 लास्ट ईयर भी आप कमा रहे थे और दिस साल भी आप $100 ही कमा रहे हो. बट whatever you could have purchased last year for $100, you're not able to purchase this year. So what you will say, the real income has come down because अब वो चीज $104 में मिल रही है. आपका इनकम यदि 100 से 102 भी बढ़ भी गया, so भी still you fall short of $2. Okay, so when cost of living rise, real income falls. This is a key line. When cost of living rise, real income falls. That is purchasing power of consumer falls. Falls या goes down. So effects of high inflation are cost of living बढ़ गई, real income घट गई, purchasing power कम हो गई. Okay, next. अब since production in your country is expensive, so price of domestic goods will rise opposed to the foreign market. तुम्हारी कंट्री में हो रहा है, उनकी कंट्री में तो नहीं हो रहा है. So countries exports will They become, look to buy from foreign, no? yeah. So domestic workers may Because lose it their is jobs expensive. if the firms do not do well. Inflation का यही minus point हो गया. Domestic workers might lose their jobs. Price of domestic goods will rise. Price of domestic produced goods will rise. ये सब इन्फ्लेशन पे पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो अपने को समझ के लिखना है. प्राइस ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स विल राइज एज कॉस्ट लाइक वेजेस, रॉ मटेरियल्स, ओवरहेड सब बढ़ गया ना महंगाई के कारण. एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ब्रैकेट में लिख दो मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स rise. So cost of production बढ़ गया, cost of production will rise
So price of domestic goods will rise as cost of production rise. मतलब material, labor और overhead का cost बढ़ गया है, causing profits to fall. जब कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट गिरेगा यदि आपने सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ाई. causing profits to fall. So if लोगों के पास काम ही नहीं है तो लिविंग स्टैंडर्ड भी तो गिरेगा. सो दैट विल हैपन जो हमने पहले मेंशन किया, लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल एंड रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट. सो पॉइंट नंबर 2 के हमारे कीवर्ड्स क्या है वो हम देखते हैं. अचीव प्राइस स्टेबिलिटी. इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल. तो इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन की बात हो रही है. रिडक्शन इन जनरल प्राइस लेवल इज डिफ्लेशन. सो ये मेंशन करना पड़ेगा कि डिफ्लेशन क्या होता है. दोनों इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों के बारे में लिखना है, which is also discouraged. Low inflation can help develop the economy and grow better. So what will you choose? High inflation, deflation or low inflation? So answer will be हमेशा इकोनॉमी के लिए क्या अच्छा होता है? लो इन्फ्लेशन अच्छा होता है. नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन आर. यदि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है सो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ लिविंग विल राइज. कॉस्ट ऑफ लिविंग राइज हो जाती है. रियल इनकम फॉल्स. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर गोज डाउन. मतलब उतने ही वॉट एवर ही वॉज अर्निंग लास्ट ईयर वो उतना ही अर्न कर रहा है, उसके बाद he is not able to buy as many goods and services as he was able to buy last year because the value of money has gone down. So price of domestic produced goods will rise. Cost of production में क्या क्या होता है you should know. Cost of production में material, labor, overheads होता है, that will rise and profits will fall. So now economic objectives. First two objectives we have already studied. Maintain economic growth and achieve price stability. उसके बाद the third economic objective will be reduce unemployment and fourth will be maintain balance of payment जो हम करेंगे. So third economic objective, reduce unemployment. सुना है खाली दिमाग शैतान का घर. द पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क शुड वर्क. ओके, घर पे नहीं बैठने का. So unemployment exists when people are willing and able to work cannot find job. So सबसे पहले लिखो unemployment exists. होता क्या है वो एक्सप्लेन करना है. When people are willing and able to work cannot find job. So यदि सब लोग एम्प्लॉयड होंगे तो दो चीज अच्छी होगी, हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स, हायर आउटपुट. लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या है? सीधा सीधा लो लिविंग स्टैंडर्ड्स, लो आउटपुट प्रोडक्शन बाय अ कंट्री. सो एक्सप्लेन करो आगे. अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू लोअर आउटपुट. प्रोडक्शन ही नहीं होगा फैक्ट्री में क्योंकि लोग काम ही नहीं कर रहे. अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू लोअर आउटपुट in economy and also fall in a person's standard of living. yes, and fall in living standard या fall in standard of living and fall in कमाएंगे नहीं, living standard क्या maintain करेंगे? fall in standard of living.
because unemployment, people who are unemployed are not producing anything for the economy. So when there is unemployment, what will happen to GDP of the country? Will fall. Okay, so right now, because of unemployment, GDP of country will fall. And economic growth will also go down. And economic growth will go down. So unemployment का अलग से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए सारे कीवर्ड्स आपको वापस दिए. Economic growth will go down. Further, you can write reduction in production of goods and services. वो भी होगा, unemployment होगा तो. Then government has to pay unemployment benefits. Reduction in production of goods and services. Reduction in production of goods and services. So the Then business will go into blank state. Government will have to pay unemployment benefits to people. ठीक है ना? So ये government पे और भार हो गया कि ये जो लोग unemployed है उनको at least basic खाना रहना food clothing तो provide करे. तो government will have to pay unemployment benefits to unemployed people. So इससे क्या होगा? Government पे और भार हो गया. The money which government could have spent on education, healthcare, communication, betterment of the country, now the government will have to spend that money on giving unemployment benefits to unemployed. So it is pressure on government to provide unemployment benefits that money could have been spent on infrastructure, education, Health, etc. If it was saved. अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने में वो पैसा चला गया, जबकि वो इन सब के लिए यूज हो सकता था. Now next, fourth point is very very important children. Maintain balance of payment stability. ये अलग से भी आता है, हर पॉइंट इस क्वेश्चन का अलग से आता है. एक क्वेश्चन को हमने पूरा 35 मिनट्स लिया है बिकॉज ये क्वेश्चन ही इतना इंपॉर्टेंट है. टोटली भी इंडिविजुअली भी हर पॉइंट एग्जाम में पूछ लेते हैं. Maintain balance of payment. So balance of payment क्या करता है? This records difference between countries' imports and exports. Imports क्या है? Goods and services brought within the country. Exports goods and services produced और foreign countries को sold out जो है वो.
So this records difference between countries' imports and exports. Imports are basically goods and services brought in by a country from another foreign country. So government aim क्या करती है? Balanced payment पे. That is export import. At least ये तो ना हो कि import ज्यादा हो जाए और exports कम. Because imports ज्यादा होंगे तो you will have to pay more foreign currency to the countries. So Profits of the business will decrease. Yeah. The expenses बढ़ गए. So if what will happen यदि imports ज़्यादा है तो if imports of a country exceeds, if imports of a country exceed exports, it will cause depreciation in the exchange rate. आपकी home country गिर जाएगी. It will cause depreciation. It will cause depreciation in the exchange rate. Exchange rate का मतलब क्या है? Say $1 is equal to 70 rupees. So that is the exchange rate. It will cause depreciation in the exchange rate. That is value of country's currency falls against foreign currencies. But what will happen if exports exceeds imports? So if exports, storage issues exceed import, export यदि हो रहा है तो अच्छी बात है. स्टोरेज इशू अरे भेज देंगे ना दूसरी कंट्री में. इफ एक्सपोर्ट्स एक्सीड, मतलब स्टोरेज इश्यूज कम होगा वैसे. अच्छा, इफ एक्सपोर्ट्स exceeds imports तभी क्या होगा? That is your country is selling more goods to other country. इनकम बढ़ेगा. So इनकम बढ़ेगा, फॉरेन करेंसी आएगी कंट्री के अंदर, देन अगेन standard of living भी बढ़ेगा. If exports exceeds imports, that is a country is selling more to foreign country, then what it is importing. So in that case, home currency will become stronger. And last fifth point है जो है reduce income equality. Inequality. So income inequality क्या होती है? The gap between या the difference between income of rich and poor people will become narrow. The gap
between the gap between the income of rich and poor people will become narrow. Better living standards for people. क्योंकि यदि इक्वालिटी होगी सबको काम मिलेगा, तो देयर इज बेटर लिविंग स्टैंडर्ड for people. That will help economy to grow faster and become more developed. होता ही है ना, underdeveloped से develop, developed से developing. So better living standards for people, economy will grow faster and become more developed. Economy will grow faster and become more developed. The overall income of people That will rise. increases. Income यदि बढ़ेगी तो there will be better living standards for the people. Economy will go